The importance of water is not describable. I don't think anybody on this world can survive without water. Our body itself is made up of more than 70% of water. And as a neurologist, I can say it's more than 80% in the brain. We do see a lot of patients arriving in the hospital because they have not drunk enough water. Now, when I came to the UK, I was surprised by the different types of coffee. We think, okay, coffee is coffee. But then they ask me, skinny latte, with sugar, without sugar, with milk, without milk, what kind of milk? So when my children, Love and Kush, presented me with Kangen water, that was the first time I was introduced to this machine and different types of water with different pHs from 2.5 to 11.5. And that's when I started doing my own little research into how can drinking water make a difference to your health. I would also like to say that when you are born, you're born with your body, and it is your prime duty to look after the body which has been given to you. And if it is more than 70% containing water, it is very important that you drink a very good quality of water. So I'm very grateful to my children who bought me this machine, after which I have been able to look more into detail about what kind of water we are getting from this source. The Kangen water was very easy with their guidance to plug it up into my filtered tap. And I started with 8.5 pH. Love has given a bit of introduction about the machine, so people are aware that you get different types of pH water. But just for those who may not be aware, this is electrolyzed reduced water. Now, the importance of electrolyzed reduced water is that it also removes the chlorine, which is used to purify water, which is more harmful to our body. It also removes the toxins. So I use the 11.5 water to wash all the vegetables, and I'm shocked to see the amount of residue that is coming out in the water. And that is probably what, till now, we have been consuming in our bodies. And although I don't have clinical studies to say how bad it can be for your body, from the epidemic and endemic and the general health of the world, we are aware of how many illnesses are increasing in the world. Metabolic syndrome, which consists of obesity, diabetes, high blood pressure, these are the common diseases which are very commonly seen globally, not just in India or abroad. So it has a lot to do with the lifestyle as well. I mean, everybody is aware that you should be drinking more water. ज़्यादा पानी पीने से आपको स्फूर्ति भी रहती है. But I think with Kangen I have realized that you do feel more energetic as well. And you can drink more water, which has been recommended about 2 to 3 liters, without feeling the fullness which you would normally get with other waters. And on reviewing the literature which is available for Kangen or electrolyzed reduced water, I'm very impressed that the water that we drink, the Kangen water, goes to the cellular level. So हमारे शरीर में जहाँ जहाँ cells होते हैं उस तक ये पानी पहुँचता है. So the cells also become, I mean, anything you put water in, say there is a balloon, and in the balloon there is no water, so it will be flat. As soon as you put water in it, it will blow up. Similarly, at the cellular level, if the cells are dehydrated, they will be flat and they will be not functioning at their optimal level. So as soon as this water you drink, it obviously maximizes the performance at a cellular level. Now, just looking at the clinical studies, I've not been able to find any proper documentation, and I would be very keen. I am a user, Kangen water user, only for a month, but there are lots of ideas which are coming across in my mind, and this talk today has been mainly to make people aware that there is something which is known as Kangen water. It is having its own health benefits, and I think it is very important people do their own research and try and make up their minds
that whether this is the water which is going to be useful for them or not. Till date, I have not found any side effects from it, except if some people would say that it detoxified me. So maybe around 10 to 15 days of use, you may have increased frequency of your stools, which will be lighter, and you will feel detoxified. That's how I felt. And I think that is something which is personal, and everybody is different, and everybody's experience and journey is different. I have continued using the 8.5 pH and not gone to 9.5 because I'm going to do it at a monthly basis. Yes. So, I mean, I could go on and on about water. I mean, water is elixir of life, isn't it? Amrut hai, amrut. Pani ke bina nahi ji sakte. Yes, definitely the water is the life. But I want to ask you, what makes Kangen water unique from other water? There are so many water available in this world. We are drinking it. Right. Why we going with Kangen water? Yeah. So what I found with Kangen water is, as Love explained initially, that it has got microclustering and antioxidant effect. The antioxidant effect is very important. At the moment, everybody is under a lot of stress, not only physical but mental. And this Kangen water is supposed to help at a cellular level, and that's why I would say Kangen water. So if you take two things, one which has got a lot of impurities will be definitely thicker, and I think Kangen water is lighter, and that's why the absorption is at the cellular level. So the doctor that you mentioned from Japan did endoscopic study, and I think he mentioned that the water is absorbed from the lower part of esophagus and into the stomach. So by the time it goes into the intestine, it has already been absorbed and reached all the cells. So I think that is pretty impressive. Yes. And I want to also know about which are the benefits we can get by the Kangen water. Which type of changes in the body, how it will be help to us. Well, the studies I have come across have been shown to be beneficial to prevent diabetes. I would not say that the person who is already diabetic should stop the medication, no. But if there is a family history of diabetes and you make lifestyle modifications, along with that you introduce Kangen water, probably you may be able to prevent diabetes and probably other illnesses like high blood pressure as well. It has also been said to help. Maybe by drinking Kangen water, you are more health conscious. And I think I have to congratulate each and everyone who is joining us today, because they are here because they are conscious of their health. Because this is something positive towards a better health. And that is where people have found time to be here and listen to me. So I would definitely congratulate each and everyone who is listening to us today. So lifestyle modification is very important. Just drinking Kangen water will not make your life better. But I think being aware of what you are introducing in your body will definitely make you more mindful and will help you think, am I eating or drinking the right thing? Yes. Thank you. And I also want to know what is your personal experience with Kangen water? Do you have any benefit from last 1 month or for your patient? No, I have not introduced this to my patients. I'm sorry, this is only for my personal use and my family, and I'm very happy with it. On the first week of its use, my children, Love and Kush, told me, Mummy, try 2.5. It is a very good bactericidal water. So, and then I looked up on YouTube. I found quite a lot of videos. There's a dentist who's using it in the mouth as well. So, and I had a hematoma on my foot. Something must have dropped on my foot, and it was all black and red. And I was quite disgusted with it. So I sprayed the 2.5 water on it. And to my amazement, the next day it had become completely light. For me, if I get hurt, usually it takes about a week for the lesion to heal. And this was for me really the experience of what we call a miracle water. So I'm yet, I would say, an infant,
a baby in the use of Kangen water, but till date I have been very impressed, and I think there are lots of applications which need to be tried and tested so that people may have more confidence. But as you mentioned, I think it is an experience. So unless the person experiences it themselves, drinks it themselves and does their own research, it will be very difficult to say either way. Yes. One more question. So many people says that Kangen water is replaced the medicine, or this is the medicine for the any curing disease. So what will you say? I would not say that it is a medicine, but it is definitely something which will prevent you from needing to take the medicine, if you understand what I say. So dawai nahi khani hai future mein, to Kangen water piyo. That is what I would think. And not only Kangen water, I think just generally leading a healthy lifestyle, trying to reduce weight, trying to do exercise. It's like doing yogasans. I mean, everybody knows that yogasans are good for your body. It's not same as exercise. Meditation is good for your mind. And people are trying to bring that into their lifestyle. Similarly, as more than 70% of our body is water, if we introduce healthy, pure water into our body, I'm sure it is going to have a positive effect. Yes. Thank you. And please give us some suggestions for all your guests and all your distributor. So what is your suggestion for us? I am very keen to do a questionnaire to all the Kangen users. So I will design a questionnaire which can be passed on to all the Kangen users, which will be very brief. It will just take 2 minutes of your time. And collecting that data, we will be able to see that everybody's experiences may be different. Some may be positive, some may be negative, we don't know. But we can build on that and try and improve or try and learn from each other's experiences. Yes. Thank you very much for giving your precious time. Yeah, I hope I have created an awareness, because that's the main aim of this talk today. So it is awareness to be healthy and to maintain a healthy lifestyle, for which water is, I think, a majority percentage in your life. Yes. Thank you. Thank you. Yes. Namaste. Yeah, thank you. Thank you, Dr. Viral. Yeah, good evening, everyone. I am Dr. Gaurav Chhabra. I am pulmonologist working in Gitanjali Medical College and Hospital as a professor, and I am in charge of COVID caring unit. And from last 1.5 year, we are around 15 months we are dealing with lots of COVID patients. सबसे पहले, first of all, I will share my own experience about the Kangen. I experienced, as already I think Dr. Viral, you said, okay, this is the experience. Yes. Really, it's experience. And my experience is I have a very profound shift in my well-beingness. मेरा एनर्जी लेवल जो है वो उसके अंदर शिफ्ट आया है. इनिशियली मैं काम करके बहुत थक जाता था, जैसे हॉस्पिटल में गए, स्ट्रेस तो रहता ही है सारा. देन घर पे आने के बाद मेरे को एक नैप चाहिए 1 घंटे का, और अभी मैं पिछले काफी समय से आई एम नॉट स्लीपिंग. डे टाइम में मैंने सोना छोड़ दिया है, और इवन नाइट में भी मेनी टाइम्स जो है 12-1 बज जाता है. और उतना थकान जो मैं पहले बहुत ऐसा लगता था शरीर को घसीट रहे हैं, उससे जबरदस्ती काम ले रहे हैं, वैसा आई एम नॉट हैविंग दैट. तो अभी राइट नाउ आई कैन वर्क इवन 2 days 3 days कंटिन्यूअसली, जो पहले में काम नहीं. तो डेफिनेटली इन माय एक्सपीरियंस आई एम हैविंग वेरी प्रोफाउंड शिफ्ट इन माय वेलबींगनेस. और इवन नाउ पहले मेरे घुटने काफी दर्द करते थे, और मैं सीढ़ियां चढ़ना अवॉइड करता था. दिखने में तो बढ़िया है, मैं बहुत ज्यादा फैटी नहीं हूँ और ऐसा है, बट उसके बाद भी आई अवॉइड. और बैडमिंटन खेलना मुझे पसंद है, आई डोंट प्ले, बिकॉज मेरे को लगता था यार मैं बहुत ज्यादा अगर थोड़ा सा भी हो गया तो अपना काम बंद हो जाएगा. तो ऐसा था. तो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग Kangen सिंस 9 months,
अभी 9 महीने हो गए मेरे को, और अभी पिछले 4-5 महीने से मैं दबा के बैडमिंटन खेल रहा हूँ, और मेरा फ्लैट है 5th फ्लोर पे है, मेरा चैम्बर इन माय हॉस्पिटल, माय वार्ड इज इन 5th फ्लोर, मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। और कोविड के टाइम से वैसे भी मैं लिफ्ट यूज नहीं करता हूँ, तो अभी तो वैसे भी मेरा को इंटरेस्ट आ गया है कि अब मैं सीढ़ियाँ ही चढ़ूं अपनी फिटनेस के लिए। तो दैट आई फील कि नाउ आई कैन डू दैट। और आई एम अ डायबिटिक पेशेंट, और लास्ट 9 महीने से मैं अपना HbA1c देख रहा हूँ। HbA1c 3 मंथ का आपको डायबिटीज का आइडिया बताता है कि आप कहाँ पर चल रहे हैं, राइट। और मेरा अभी 3 मंथ से मैं देख रहा हूँ, लास्ट 6 महीने से मैं देख रहा हूँ, जो पहला मेरा 7.2 तक चला गया था HbA1c, अभी लास्ट 2 टाइम से 5.2 और 5.6 चल रहा है। दैट इज विद इन नॉर्मल लिमिट, और दैट इज मेरे लिए भी एक वो दैट इज रियली वेरी गुड थिंग मेरे लिए। तो आई एम रियली फैन ऑफ नाउ, I cannot express, this is just your experience, right? And one more thing मैं बोलूँगा कि मेरे पेरेंट्स भी डायबिटिक हैं। मेरे फादर का शुगर पहले कंट्रोल नहीं था, नाउ ही इज टेकिंग ओनली 1 टैबलेट, आई एम ऑल्सो टेकिंग 1 टैबलेट। जैसा कि बताया कि इट्स नॉट फॉर रिप्लेसिंग द मेडिसिन, बट डेफिनेटली योर मेडिसिन विल बिकम वेरी लेस, और वो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और इवन उसके एसिडिटी वगैरह का तो 3-4 दिन में मैं वी डॉक्टर्स आर यूजुअली मेनी टाइम्स हम स्ट्रेस में रहते ही रहते हैं। आप Yes. कितना भी अवॉइड करें, पेशेंट का स्ट्रेस, कुछ ना कुछ स्ट्रेस माइंड में रहता है, तो उसकी वजह से क्या थकान और ये सब रहता है, शुगर हाई हो जाना, ये सब रहता था। तो अब अभी ऐसा कुछ है नहीं, उसमें काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो मेडिसिन भी कम हो गया है, एसिडिटी वैसे ही काफी हद तक ठीक हो गया। अभी मैंने काफी लंबे समय से एंटासिड्स वगैरह नहीं लिए हैं। अभी मुझे ये भी पता नहीं है कि मैंने एंटासिड कहाँ रखे हुए। पहले मेरी बगल, मेरे पलंग के साइड में टेबल में एंटासिड जरूर होता था। रात में 2 बजे 3 बजे नींद में हाथ मारता था और ले लेता था। दैट वाज माय प्रैक्टिस, है ना। तो अभी ऐसा नहीं, तो दैट्स ग्रेट थिंग। और यही मेरे फ्रेंड्स का भी एक्सपीरियंस है, जस्ट एक्सपीरियंस। Yes. I am inviting everyone to experience. Yeah. Yes, और डॉक्टर गौरव, मैं आपको सबसे पहले हम सबकी ओर से शुक्रिया भी करना चाहूंगा, क्योंकि इस कोविड के दौर में जो आपने हेल्थ वॉरियर की भूमिका बजी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट। एंड आई ऑल्सो वांट टू नो दैट व्हाट इज द एक्सपीरियंस अबाउट द कोविड। क्या आपको कोविड पे कुछ एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हुआ? Yes. और आपका तो भी फेवरेट सब्जेक्ट है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो उसके रिलेटेड हमें कुछ बताइए। एक्चुअली मैं इस पे काम कर रहा हूँ अभी। ये RCT तो नहीं है, दिस इज माय जस्ट ऑब्जर्वेशंस। पहले तो मैं अपने से ही बात करता हूँ। आई एम रेगुलरली कमिंग अक्रॉस विद कोविड पॉजिटिव पेशेंट रेगुलरली, राइट। और लेकिन अभी तक बिकॉज मैं इस ग्रेस ऑफ द गॉड, है ना, मेरे को आई एम सेव स्टिल ऊपर वाले की दया से। और मैं केंगन को भी श्रेय देता हूँ इसका कि समवेयर मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय बिलीफ, कि मुझे लगता है कि यार मैं शायद इसकी वजह से भी बचा हुआ। तो ये भी एक मेरे को एक एस्पेक्ट है। और दूसरा, मैंने कुछ मेरे पेशेंट्स जो कोविड पेशेंट्स जो मेरे रिलेशनशिप में फ्रेंड्स और इसमें मेरे यहाँ पर एक मित्र हैं, उनके साथ मिल करके मैंने उन लोगों को वो पानी पहुंचाया है जो सीवियर थे और जो मॉडरेट केसेस थे। दे रिकवर्ड, बट I cannot comment, I cannot say कि वो केंगन की वजह से ही रिकवर हुए, but they recovered. That is my observation. है ना। अच्छा, और दूसरा एक जो आपने बात किया पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस के लिए, we are having big challenge of this disease. होता क्या है इसमें कि कोविड के बाद में फेफड़ा सिकुड़ जाता है और उससे ऑक्सीजन क्रॉस नहीं होती और लोग ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मैंने उन पेशेंट्स में मेरे पास अभी 30 पेशेंट चल रहे हैं, और 30 पेशेंट्स में आई एम यूजिंग, उनमें से मैंने आधे पेशेंट्स को दिया है, आधे पेशेंट्स को भी नहीं दिया है। जो मेरे अप्रोच में है उनको दिया है, लेकिन मैंने ये 2 ग्रुप बना लिए हैं कि भाई मैं इनको दिया है तो मैं देखूं कैसे रहता है। तो इन माय ऑब्जर्वेशन आई एम नॉट, मैं क्लेम नहीं कर रहा हूं, बिकॉज आई हैव नॉट डन द RCTs, बिकॉज वी डॉक्टर्स बिलीव ऑन ओनली RCTs, क्योंकि डबल ब्लाइंड रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल होना चाहिए, तब जाकर के हम कह सकते हैं। बट दैट इज माय ऑब्जर्वेशन कि ये उसमें काम करता है, क्योंकि बैकग्राउंड जो मेरा कॉन्सेप्ट है, हम लोग एक पैंथर ट्रायल है, उसके अंदर ये देखा गया है
कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और हम एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं एन एसिटाइल सिस्टीन। सबको पता है म्यूसिनैक या ल्यूबिनैक और इस तरह की ड्रग्स आती हैं 600 मिलीग्राम की। आपने अपने, क्योंकि अभी एवरीबडी इज एक्सपीरियंस्ड अबाउट कोविड एंड पोस्ट कोविड पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो डॉक्टर ने कहीं ना कहीं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आपको पानी के अंदर घोल के लेने वाली 600 मिलीग्राम की गोलियां दी ही होंगी। वो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट है, एन एसिटाइल सिस्टीन। तो मैंने उन पेशेंट्स में कुछ में एन एसिटाइल सिस्टीन कंटिन्यू किया है और कुछ पेशेंट्स में मैंने कैंगन पानी दिया है। तो मैंने ये थोड़ा ऑब्जर्व किया है कि उनके अंदर थोड़ा रिकवरी फास्ट है, उनका ऑक्सीजन डिपेंडेंसी थोड़ा फास्ट कम हुआ है। डेफिनेटली उन दूसरे पेशेंट्स में भी कम हुआ है, लेकिन एज कंपेयर टू मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें थोड़ा फास्ट है, क्योंकि हम कैंगन वाटर की भी वन ऑफ द प्रॉपर्टीज एंटीऑक्सीडेंट और एल्कलाइन प्रॉपर्टी है, जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हेल्दी सेल्स जो होती है वो एल्कलाइन होती है। तो डेफिनेटली इसका रोल है, बट इट इज वेरी अर्ली टू से एनीथिंग, बिकॉज अभी मेरे को बहुत लंबा एक्सपीरियंस नहीं हुआ इसको उन पेशेंट में यूज करने का, बट मेरे ओपिनियन में इट इज वर्किंग। Thank you, Dr. Gaurav, for your nice experience with the Kangen water and also with the COVID patients. Yes, thank you. Thank you.